1, 2, 3, 4. ओके, अब हम लोग के माइक्रोफोन से अभी वो लोग के हम स्क्रीन वो नहीं कर रहा है अभी खाली हम तुम्हें वो लोग के खाली हेलो नहीं बोले दोनों के स्क्रीन में देखें तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 63 फिजी इंडियन टीवी में एक बार फिर हम सभी को तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं एपिसोड नंबर 63 थोड़ा ठंडा है ना it's not too bad, it's 18 degrees actually nice sun बाहर है it's quite good well मैं हूँ परम शिवन विश्वजीत हमेशा की तरह तो आज हमारे दो और दूसरे साथी हैं एक तो रास्ता में अटके से और दूसरा वाला की गाड़ी कुछ बिगड़ा प्रॉब्लम गए हाँ बिगड़ा और आज हम बातें कर रहे हैं कुछ निक नेम्स के बारे में खास तौर पर कि छोटे जब हम थे हमारे बच्चे थे यू नो we have names well welcome them क्योंकि नोजी भी रास्ता में है शायद पहुंच जाएगा लेकिन हमारे पास दूसरे साथी है उसको हम वेलकम करना चाहते हैं हेलो हाउ आर यू विनोद एंड डॉक I'm good, Param. वेलकम Thank you. अब तुम स्क्रीन में आएगा आप Good to be on Fiji TV again. फिजी इंडियन टीवी है Fiji Indian TV. इंडियन बोल रहा मैं है तो ठीक हूँ अनिल कुमार हमेशा की तरह कभी जिंदगी में कभी धूप कभी छाँव कभी मनोजी कभी मनोज देखिए वो तो हमारा आइकॉन था ना पूर्व और पश्चिम हाँ वेलकम नमस्कार is dead is he or still alive in wheelchair actually okay I think it's 70 माने कि hip replacement 78 I think आसपास घूम रहे हैं क्या he's in wheelchair actually ओह नो हम लोग भी हो गए ना डॉक एक दिन अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे life is short but we'll get there and we'll have some fun we had some fun at our show last night उसके बारे में बाद में कुछ बात करेंगे yes of course and it was quite a successful show Successful. बहुत ही सक्सेसफुल जी हाँ और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग आगे बढ़ते हैं हाँ आगे बढ़ते हैं आस्ते आस्ते स्लो मोशन में we seems to be a bit tired because we had a late night seems नहीं हम लोग टायर्ड है यार बहुत खराब से बहुत ज्यादा लोबो खा लिया लगता है कल actually I haven't eaten the lobo मैं और लाया वरी नहीं करना अरे तुम लेके आए थोड़ा thank you it was nice actually I had some last night you know the shank was really it's done really well actually well किसी ने फरमाया कि we looking good of course we always look good Fiji Indian TV है Thank you. सुंदर लगना चाहिए और आज एक सरप्राइज आइटम है हम माइक्रोफोन वगैरह सब सेट कर लिया बिकॉज हम गुरुजी के बुलाया आज मतलब कहने आओ घूमो तो आई से इसके लेके साथ में बट इसके हम लोग फोर्स करके हम लोग गाना का भेजा नहीं मांगेगा आप शर्मा है बट हम लोग ट्राई करें कि भाई गुरुजी किसके बोला भाई हाँ जी गुरुजी किसके बोला गुरुजी हाँ आप कुछ बोल रहे थे तो कल रात को यानी कि सुबह गुरुजी ने बहुत अच्छा गाना गाया अच्छा आप पोस्ट देखा अभी नहीं देखा बट वो लाइव थे ऑफ कोर्स एंड well it's been a wonderful week और एपिसोड नंबर है 63 guys today okay and episode 63 है Fiji Indian TV chat rooms में जाइए www.fijiindiantv.com देखने के लिए और साथ साथ में if you want to comment go to www.onradioafsana.com and our email address is of course fijiindiantv@hotmail and guys when you go to our Facebook on our Facebook group as well as our website there's a little bit of changes over there कुछ हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ ट्रैक्स वगैरह हम रिलीज करेंगे तो इसके बारे में कुछ बातें हम करेंगे लेकिन आज का जो मुद्दा है we talking about as kids you know we had names you know हम लोगों का जितने भी हम लोग हैं सबके दो खास रहे इनका भी कुछ आज हमके पिला गया आप लोग we'll know your nickname today dog everybody knows it so I have to be honest yeah okay. everybody had a nickname so you know and it was good fun to have a nickname but some people have actually you know अभी तक जिंदगी में अभी भी वो नाम यूज कर रहे हैं उसके पीछे एक राज रहता है there's always a story हमारे पीछे है एक राज नॉर्मली कुछ हादसा होता है या कुछ एक्सपीरियंस होता है या कुछ हरकतें होते हैं या you know इस तरह का कुछ न कुछ पर्सनैलिटी होते हैं जो कुछ लोग हड़ताली रहते हैं या कुछ थोड़ा लेजी होते हैं तो उसका नाम लग देते हैं ना बिल्कुल yeah so we are going to talk about that plus we'll be talking a little bit about some charity and hopefully Anoji makes his way here I don't know if he is making his way his गाड़ी is गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई ना कल रात को मेरे ख्याल से yes after the show it happens but if you make it it's good otherwise we'll proceed with him on his way and he's probably listening to us on radioafsana.com so we'll play a little song and we'll come back with a few more things and please excuse us for our tiredness
Also, Divya Bharti, Yes. our icon, left us early. Yes. And you noticed Shahrukh ji blue jeans में थे. Really young, no? Really young. I think that was the 80s film, no? जी, हाँ. 80s. नहीं, 94 का film था. You hardly see him in jeans. 94. थोड़ा मोटा थे उससे. Maybe It was quite bit of young, baby fat था उसका दही में ना, body fat. Good dancing, nice actress. Well, guys, it's been a wonderful week. A lot of things happened. Any bad news around the world, guys? There was earthquake in Solomons, but छोटा वाला था, tsunami नहीं आया. No, yes, Yeah. okay. Well, guys, look, it's very important. We'd like to thank Dr. Anil for doing such a wonderful, he was very worked hard yesterday. Yeah, he was. And we must congratulate you, Doc, for putting such a big effort. I think you were the only one in that whole Fisker group doing a lot of work. No, And apologies to those who were I involved. think There's three of us, 3 or 4 of us. Avindra did a few. There's 3 of us. Yeah, Avindra and Doc, but I think Doc And now was the most Naftaran man Prakash who Prakash is was basically it. our Yes. events manager. उसके लिए एक जल्दी से plug कर देते हैं. He's doing a show on भाई साहब. On the 1st of August. And आप उसमें भाग ले रहे हैं. Yeah, It's Sign a up, Rafi you've been night. signed up? Okay. Good. Rafi good. night है शायद. but it's different नाम है कुछ. Okay, नाम different और mostly Rafi गाना रहेंगे. Because I think concept is कि Fiji passed away on the 31st of July. So it's in his memory. Very good. कहाँ पे है ये? अभी कुछ है venue जानकारी? के sure नहीं है. Flyers कल रहा हूँ, but I didn't Okay, take okay. Well, we'll grab some details of him later, Doc. So, that was good. And it was a good, reasonable amount of people there. Very Reasonable, well-mannered people. People enjoyed, and it was a very laid-back show. ठंडा था. काफी ठंडा था. But highlight of the show, what do you guys liked about the show? I won't ask you, I'll ask. Well, 3 of us are going to answer because you were so busy. I'll be last. What was the highlight of the show? Highlight was I was talking a while ago before off air to Doc. He actually invited my daughter Shreya to sing the national anthem, Australian national anthem. Which that was a really proud moment for me. I really felt proud about. For all of us. Yeah. Oh, okay. I really felt proud her singing the national anthem, and She reminded me of Paulini, Doc. I don't know if you can remember. I remember Paulini, she was yeah, on Australian Idol. Yes, Yeah. yes. She did a good rendition of this Australian anthem a while back, and reminded me of that. So how old I one And day. you say she hopefully- didn't practice much? no, she didn't She knows it. practice. She knows it. She does it in school, I think. ये बोलना चाहिए क्योंकि she's naturalized ना तो nervously करने के लिए तो Surprisingly, she didn't know the Fiji national anthem. She had to look at the lyrics. That's why I wrote the lyrics. और Basically, that was the highlight for me, being there. Okay, yourself? I mean, Shreya, as I came in, then I heard Shreya singing national anthem. Se pehle I don't know what happened before that, so yeah. And the other thing was, we had good blend of singers in there. I mean, Variety tha? Yeah, variety tha. Yes. There was good variety of singers in there last night. Well, apart from all the singers and all the tits and the little, all the little bits, sorry for slip of a tongue over there, the highlight, I enjoyed the dhol guys, man. They came in the tapla and all those things. 6 of them, including Oh, one surprisingly, 2 girls were there. girl. 2 girls, yes. And when they walked in, what did they actually play? Dum to nak nak nak. Was it the They theme? played 8 beat and then 6 beat. जो ढंढ वो तो जानो कह रहा है 8 beat है 4x4. But they started off with the one that they used to play. Yeah. Yes. लेकिन वो गोइंदा में वो जो fireworkers बजाते हैं. They played that one. That's the beat. what I thought. I heard that one. I'm like, कोई को पता ही नहीं जाए भी कहीं. Well, I was just going to say, it's to incite people to dance. It was good actually, Isn't it? and it was something I've never seen in my life here in Australia. I've never seen it. And it was quite amazing. It was quite हमारे indeed हिंदुस्तानी amazing. भगवान लोग जो डमरू वगैरह बजाते थे, नाचते थे शिव भगवान वो, तो वो बीट उसमें वो यूज करते थे because it gives you uplift करता है आपको ना. It uplifts your spirit कि मतलब you leave your body. उसके बारे में बात करेंगे. जैसे अपना बोले कि sometimes हमारा physical body हमारा spiritual body है ना, तो it raises your emotional level. See? Yes. That was good, and plus something new to see. Some new talents were over there yesterday to acknowledge and see. Some good guys were singing, and there was a guy on a wheelchair. So as we proceed throughout the program, we will actually obviously try to get in touch with them and one day bring them here. But Ron says hi to you, Vinod Chandra. Hi, Ron. Lofty song, and Thank you. Bola. we've promoted a song on Facebook and all that. We'll be talking a little bit of that. But let's get into the program. Nicknames के बारे में हम बात करते मेरा हैं. जल्दी से मेरा highlight बता दो. हाँ. The program was a bit messy, and there was MC there who's controlling his, and he wasn't struggling. He was controlling very well as usual.
That's why I appointed him. And so I have to thank the MC for controlling, and he knows when this kind of function happens, social, that thoda khichdi ho jaye na. So our hats off to Mr. Paramji. Wonderful, thank you. It was okay, I did okay. I could have done better. Thank you. You know, somebody asked me last night, why were you doing MC from the back? No, MC jo hai, I think it should be kept to a minimum because people come to listen to watch the other events that is happening, you know. But I do come once or twice on stage and that's it. But I prefer to stay at the back so people can just get on with everything. So you can get everything moving. Agar tum stage mein ishe rahega, then you talk, hey, so it doesn't look good. He's hiding something. That's his style, man. You got my question, right? That's a good job. And we had an inaugural presentation by Zura and our friend Noji. Yes. I think was it the first time he had performed on stage in that way? Yes. Probably. I don't know, but yes, probably. But today, yes. And I enjoyed my guitar playing at basic. Yes, I enjoyed your guitar playing as well. So I've got a long way to go, but thank you guys for putting up with me. जो गाया रहा हारमोनियम ले कौन गाना रहा? रात सपना. रात सपना was good. एक दो लाइन खड़ा because otherwise लंबा हो जाएगा रात भर बाजा में बैठे रहते हैं ना. But we were just planning, we'll talk about it later. So we are all musicians, why not when we do our show we all play? Well, we need to do a program where we could learn about things and we could express our views as what goes behind. I think it's very important कि even social karaoke events में जो चीज़ होते हैं उसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी. But not today. Today is the highlight of we talking about nicknames उसके बारे में. But probably next week or the week after we'll discuss about what goes behind the show जो हम लोग देखते हैं कितनी मेहनत होती है कितनी भागदौड़ रहती है ना उसमें उसके बारे में हम बातें करेंगे. But today, Doc, कैसे हैं तुम? बहुत अच्छा. What's your nickname? My nickname is Rao. Incidentally, Rao is used by a lot of people. Yes, R-A-U. Rao का मतलब? अच्छा, Rao एक आदमी था. It's actual Fijian name, Ethiopian name. Bulla Rao. हाँ, Bulla Rao ना. तो Rao में जैसे कि कैसे यार वो मैट ना. But हमारे गांव में जब हम छोटा शुरू कर दे. हाँ. तो हम छोटा था तो एक आदमी था छोटा सा मोटा था तो वो तव्यूनी में सभी फंक्शंस में जाता था. तो थोड़ा हम जो बोलते नहीं पेटू हाउ होते हैं ना खाते हैं और भर के भी ले जाते हैं. तो मेरा ख्याल से मेरा पिताजी बोला कि मैं जब छोटा था तब फंक्शन में जाता था. तुम्हारा नाम हाउ? मेरा नाम राव नहीं हाउ नहीं था. मैं भर के जेब में ले जाता था. राव. हाँ. तो मेरा छोटा गुलाब जामुन वगैरह लकड़ी एक मिठाई ना लेकिन नहीं वो जमाने में झांगिया था और झांगिया में गोली भर भर हम लोग छेद हो जाता था वो इससे ना तो इधर से भरो उधर गिरे तो दैट वाज द प्रॉब्लम ना. तो द रीजन वाज लोग जो करते उसको मोटिव देखना चाहिए खाली बिहेवियर नहीं जज करते ना. मैं भर के ले जाता था घर पर फॉर अदर पीपल कि हमारे भाई बहन है और हम मैं खाता हूँ भर के. तो लोग बोलते थे ये भाव आदमी. तो कभी कभी लोग कुछ करते अपने लिए नहीं करते not always. So motive जो है people का we can't judge. Sometimes you can judge people's behavior ना कि वो ऐसा ना वैसा ना but उसका दिल में से वो क्यों कर रहे हैं उसका मकसद क्या है. Sometimes it's different. तो राव साहब your turn. हमारे पास एक दो तीन नाम है. अच्छा शर्म लगे तो नहीं क्या है. अच्छा I'm the youngest of the family so initially started with out of how many? 4. Out of 4. तो हमारा नाम बाबू पड़ा फर्स्ट में. That's my nickname. घर के नाम सब कोई बाबू से जाने. बाबू is actually quite a respectful way of addressing someone. बाबू जैसे कोर्ट के बाबू बोलते हैं जज के बाबू. अच्छा हम घर के बाबू रहा. नहीं छोटा रहे तो बाबू बोले ना. हमारा काका के भी they refer to him. My mom refer. तो बाबू काका बोले इसके. नहीं बाबू बोले. खाली बाबू. लड़के लोग बाबू काका. वेल इसके नाम नहीं बोले. नहीं हमें भी बोले बाबू काका. फिर later on हमारा सिस्टर एक स्टोरी बुक पढ़ता रहा. I think she was in year 4, 5, 6 कुछ मेरा. She came across a character called Bob. Okay. Bob. From Babu से Bob हो गया. B to B. तो still going on. A lot of people know me by Bob. And V कहाँ से आई से? अब इसके बारे में next बताएगा. तीसरा. अच्छा तो I call my sister Bob back. बोले बाबूजी धीरे चलना. वो हमें बॉब बोले हम उसके बॉब बोलता. एंड वी कब से स्टार्ट है. व्हेन आई वाज इन ईयर 1 हमारा एक फ्रेंड रहा यूनुस मोहम्मद यूनुस वेरी गुड फ्रेंड. ही स्टार्टेड कॉलिंग मी वी. अच्छा एंड देन इट डाइड आउट.
as soon as year 8 में हम लोग we went out अपन रास्ता. So V is the initial of your actual name. Yeah. Okay. And V for victory. Yeah. And जब हम फिर काम स्टार्ट करा बैंक ऑफ बड़ौदा में, there was a lady called Mada. She started calling me V. Fijian lady, Ethiopian lady? Mada? Mada Ralenge. Okay. She was from Sabu or somewhere. Okay. And जब हम ऑस्ट्रेलिया आया तो it was not a hard name. Vinod was not a hard name. But people started calling me V, and तो अभी भी ढेर जने V बोले हैं मैं. V drink. Tell me, तो नाम से V drink निकला ना विनोद? Power drink. Energy drink. It all starts with the V, हम बोलता. Baroda Bank at the bottom of Mark Street, Mark Street, right? Century Theatre को. Century Theatre. So, opposite. Yes. India का ना बैंक क्लब. India. Still there. Baroda. Baroda. Still there. Still there. I remember. I think Baroda is a district in India. Gujarat. Yes. Gujarat. It's an area. It's a precinct. Baroda. गुजरात में बड़ौदा. तुम्हारे भाई अपन बताओ. हमार कहानी किस्मत की. अच्छा मूवी रहा. वही nickname है इसके. नहीं. My nickname used to be Bobby. My mom calls you Bobby, ना? Bobby. Most of my family members to call. उसका origin, उसका उद्घाटन. It just came out. मेरे ख्याल से just the name just popped out. So basically they just Bobby. Bobby. Yeah. बब्बा नहीं बोले था. No. Okay. I mean, their names like, male के काहे हम बब्बी बोले मैं समझ में नहीं आया. They are, I mean, a friend of mine which I played in childhood, उसके nickname मेरा बब्बी. And बब्बी is similarly, it's a family name, ना? तो family ज़्यादा करके बब्बी लड़की के represent करा जाए. 90+. लड़का ने also had बब्बी, so I was quite surprised with बब्बी. बब्बा बोलते हैं, but बब्बी भी बोले हैं. बब्बा तो है, but बब्बी for a male is quite unusual. Bobby, काफी नाम है ना. Bobby, English में भी Bobby यूज करें. Well, I don't think I had a nickname because सरकार लोग रखे से नाम हमारा, बाप बताई से. I was born at home. Mom said I was born at home. वाला नाम. So nurse came and delivered me at home. Midwife वगैरह. So you were not delivered in a suite. No, I was not in a hospital. हम जाएंगे नहीं, हम घर ही रहेगा. और my dad was actually betting कि my dad and his elder brother was betting कि नहीं लड़का नहीं लड़की भी, because I was the fourth in the family. पंडित देख के बताए सकी कौन सी जो देख के गर्भवती माता को बता रहे. चाइनीज से करो जन्म बगल के जाए तो. जो हिले ला चाइनीज से. Oh no. People do that, ना? My wife did it. देख के बताती हो लड़की है, जरूर लड़की है. पंडित लोग भी 50%. So my dad was, because was hoping कि लड़की हुई ना, तो then the nurse came कि लड़का पैदा करके, because I'm the fourth in the family. 3 लड़का के बाद में तो fourth मतलब लड़की मांगे, because the fourth child लड़की हुई, but I was a boy. तो पप्पा देख के नाम रखी से ना, परम नाम, प्रेम से परम है. तो टाइम रजिस्टर करा के they put प्रेम. तो तब से प्रेम है, but hardly anybody's nickname is always Param. Everybody knows me throughout. Very appropriate name. Probably whoever registered Janta Rao, he's very premi. Prem, with a very appropriate very name. kind. Prem और आपका personality भी प्रेमी है, and you got a humanitarian touch. So कभी-कभी वो लोग जो पुरखा बुढ़ा वगैरह देखते हैं तो बच्चा का वो जो face तो बहुत recognize है, सब तो we all look the same when you're babies. कुछ अगली रहे. Time use करें ना तो संतोलन देख के ना. Santolan. So basically it's a very appropriate name. Even Param means prime, I think. Param means love. हाँ, ultimate. Param means top ना. Param. I think Param means superior, like इसे हम बोलते हैं परम पिता परमेश्वर. I think Shivji के नाम was Param Shivam. The actual name of Shivji, they say is Param Shivam. Sort of high level, esoteric level बोलते हैं. Alter यार, ऐसे नहीं जरूरत नहीं करना. हमारा नाम जरा. You're talking generally here, okay. गुड़ के नहीं बोला परम यहाँ बेटा. So yes. अब सुर में बोले के पड़ी और मुलायमदार. Well, you know why I thought of this, because recently on Facebook and social sites, people are addressing me as Param Ji. So I'm sitting down and I'm listening to this and I'm saying कि आदमी लोग परम जी बोले, and I'm saying इतना बुढ़ा तो नहीं है कि मैं परम जी बोले. उसके भी कारण है. Why? People on जी जब लगाते हैं तो थोड़ा people थोड़ा पंडित जी हो जाए. Not in religious sense only, but कोई भी फील्ड में जैसे म्यूजिक में तो पंडित है ही. People उनके पंडित वैसे रामचंद्र पंडित राम वो माहिर होते हैं ना. They are very experienced and they are
क्या बोलते हैं उसको, they are elite, तो इसीलिए वो जी लगा देते हैं. And I thought कि सोचा दिमाग घुमाया काहे परम जी बोले. And I thought कि maybe परम sounds incomplete. To me हमला जना परम incomplete है. That words when you end हुए ना, that's why they say परम जी. थोड़ा लंबा चेहरा नाम रखे. हाँ. And then once we were doing radio shows, his name is Jeet, my name is Param. Paramjit. So we were Paramjit on radio. That actually is a name, Paramjit. Yeah. But I had a few names. One was Tenny because एक मुर्गी बच्चा. टेनी बच्चा तो जो छोटा ईट के चले. छोटा मुर्गा. फीजी में मुर्गा लोगों ने बहुत हरामी मुर्गा लोगों ने पकड़ के बड़ा मुश्किल से पकड़े पड़े. तो ये जो मुर्गा रहा बड़ा डिंजा मुर्गा रहा. अगर कोई घर आएगा उसके दौड़ाई काटे. तो फादा बताया बोले इसके पकड़ो आज शुरू वाला काम है बोले कि बहुत मेहनत तंग करे ना सबके बोले सबके दम एक्स्ट्रा तंग कर दे. अब काफी तुम हो गया हुर्रा हो गया ना कौन सी बोले इसकी हुर्रा मुर्गा उसके खांग जम जाएंगे. वेरी डेंजरस. बस उसके घर के नीचे हम लोग पूरा गैंग बुटर है ना सोकाला गैंग बटोर के बस हम लोग पकड़ा मुर्गा के. द जॉय ऑफ कैचिंग वाज बिग ना. तो सबको ले घूमे बोले पकड़ी इसको और उसमें ना. कितना देरी लगा? 10 minutes. मैंने घर के नीचे डंडा उंडा लेके अनबन पता नहीं कहाँ लड़कन के चेरी. बट एक फला लेक पकड़ा हम दो बोले ना. तो फला जोक करता ऐसे करके हम आगे ऐसे कर हमारी टोट बीच में दांत गिर गए. बड़ा दांत to go to dentist. नहीं वो बट से गिर गए बिकॉज टाइम लूज रहे दांत ना खाली निकाल के धर देगा तो बटे चोट से पन. हाँ तो तब से मैं निक नाम टेनी रखी रहा. तो I wrote a lot of articles here and there. तो I always use टेनी. Spelling? तो नाम टेनी टोट. Spelling? TENI. TENI. हाँ. तो टेनी टोट बोले थे हमें टेनी और मुर्गा टोट. हम श्रोताओं को याद करा दे. तविनी वगैरह में एक छोटा मुर्गा होता है वो टेनी मुर्गा उसको बोलते हैं. उड़ता है like a bird. It's very hard to catch them. उसको दानी लगा के पकड़ना पड़ता है. So yes, don't tease me with टेनी टोट. But I thought क्या नाम है टेनी टोट. But those murgas are very very aggressive. Yeah. पूरा अटैक करते टोट लेके. अच्छा before we forget, टेनी टोट के birthday रहा week. So happy belated birthday. Yes, all the best. Many good way to wish. नहीं तो आप people can call me टेनी ना. तो अगर कोई नहीं मांगे परम जी से ड्रेस करे they think it's you're not alone because हम भी कभी विनोद जी करे तो हम भी फील करता था same way you feel. And I thought it's nice when people call you by that. No? It's showing respect as well. I reckon. Well, nicknames are very important, because कहाँ पे जब तुम रहो people लेकर तुम्हें short name दे देना कि इसकी नाम से बुलाना या तो you might say ये कोली की नाम से बुलाना. तो it's what funny. But parents do go abroad, ज़्यादा कर देते हैं कभी अपने बच्चों को जो नाम है वो change कर देते हैं है ना कि because it is comfortable for them. तो I think in the 70s, 60s, 70s, 80s का जो दौर था सिनेमा का जो दौर था सिनेमा वाज क्वाइट बिग इन फीजी सा बिलबोटा मार के बार ऊपर घींच के रेगल सिनेमा का आगे सजात रहे कितना हिला जता. हाँ, Rajesh Khanna days. People are crazy about Rajesh Khanna and all that. We'll talk a bit about it. It was quite funny. You might share some thoughts on that. He was the 70s ka, he was the king. Before Amitabh and of course well before Shah Rukh ji. Yeah, he was उसका मूवी it was 70s was Rajesh Khanna's era. राजेश खन्ना. और ये जो 60s और 50s का जो ईरा था नरगिस नूतन वगैरह उसमें भी लोग फिल्म स्टार्स का नाम देखकर अपने बच्चों का नाम देते थे. So we'll talk a little bit about it, how our parents actually went aboard नहीं कौन सी बोले इसके overboard and क्या names हमारे पिताजी ने रखे हम लोगों का. Excessively overboard. Some people are actually trailing me that name still and उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे. Before we forget, एक दिन हमारा dad was carrying me on my back, right? And he said हमारे cousin से बात करता रहा बोले हमारा पेट पोछना लड़का है. पेट पोछना. तो ऐसे नहीं हम पेट पोछा नहीं हम नहाई के आया अभी. I didn't get what he was saying ना that I was the youngest meaning last family. नहीं pet नहीं pet पोछना means you're the last in the family. Oh, साथ नहीं आने का. Okay. I thought it just made you feel very close. Pet is stomach, pochna means wipe. What? I relates to my mom. He pet pochna. He's the last one. Okay. तो हम सोचा he was referring to me कि खाली बोले पन पेट पोछ के आई गई से आजकल. My younger sister, my father was calling her pet pochini. So that's the reason. She's the last and the youngest. And she's in America.
But hey guys, let's share those moments and relive those moments of Regal Cinema and Century Cinema. If you those who are remember and Phoenix, those watching in Phoenix and cinemas, those who don't know will share a little thought so you can laugh about it. We'll come back shortly. तेरा ही नाम लिखा है. नाम के ही बारे में आज हम बात कर रहे हैं. नाम ही की बात करें. कुछ लोग नामी भी होते हैं, बहुत कुछ लोग बदनाम भी होते हैं. बदनाम भी होते वाकई. लेकिन जैसे कि संजय दत्त वाज अ कॉमन नेम. संजय इज कॉमन नेम एंड फरहा वाज वेरी कॉमन. हमारा एक नेफ्यू है कनाडा में, उसका नाम संजय है. हेलो टू संजय. मामा का लड़का है. अच्छा, व्हाट अबाउट योर प्रिंसिपल्स एट स्कूल? Or your teachers at school? Oh, they had nicknames. Nicknames? Very, very bad nicknames. Especially if they had the chabuk. जो मैंने कल चाबुक ना चाहता रखो. चाबुक थोड़ा मारा फटाफ ओसन चाबुक नहीं. हाँ तो मैं ट्रेनिंग नहीं करा अच्छा ना. हाँ, but दगा रखा दे फटसे. Not bad. You hear it? Crack bass. दगा रखा. But they used to be very, very strict disciplinarians. मतलब है कुछ टीचर्स लोगों तो खाली प्लेग्राउंड में मार्च करते रहे, खोजते रहे लड़का जी किसके दरी आज. Did you have any teachers like that? Oh, heaps. I went to number of primary. Oh my goodness. And you know Mrs. Karan? I think I know she her taught very me well. in year 1 and Dr. Madin. Oh, Mrs. Karen. Oh, good English teacher. Good English teacher, but I still remember the slap. Because she knew my parents well, ना. हम लोग स्कूल के बगल में रहता है. तो बोले तुम अच्छा से नहीं लिखेगा, तुम बकवास बताएगा आज. बाप रे बाप. And then I didn't. Still first time नहीं लिखा है ना. But I still remember in a good way कि look where that has taken me. My writing out अच्छा है. I can boast about that. मैं बहुत अच्छा नहीं है. तुम्हें लगा नहीं रहा डॉक्टर? हाथ में चश्मा. अच्छा, एक और निकनेम मांगो जाने तब बताइए. हाँ, बता तुम आपके. नहीं. पीछा के. नहीं, एक पर्सन के हम जानता है. एक पर्सन के हम जानता है. उसका नाम जामचोर. जामचोर. जामुन. जामचोर. ओके. चोर है बताको. हाँ, जामचोर. एक के नाम में बत्तख. बत्तख also I knew someone at school. चलाई के ऊपर रख दो. ऐसे से करके चले. चलाई. नहीं बताइस नहीं आज तक. नर्रा के मादिन रहा. चलन के ऊपर भी. हाँ यार, the way. कभी अगर बात है कि बोले अच्छा बत्तख को जो बोला कहाँ दूर जाता है ये बत्तख बैठा. हंस की चाल नहीं बोले गोरी चलो ना हंस की तरफ क्योंकि चलाई के ऊपर भी रहे ना डक वॉक. बत्तख रहा. Oh no. अच्छा नाम है बत्तख. हमारा एक प्रिंसिपल था स्कूल में, वो थोड़ा ज्यादा मोटा था. Like अत्यंत गुड म्यूजिशियन, पियानो ना बजाता, लेकिन हमको हिंदी म्यूजिक कभी नहीं सीखा. Ron Allen? No, Ron Allen passed away unfortunately. He was a very good. He spoke Hindi and he played. He actually introduced Aaj Ki Sham in Marist. We sang Aaj Ki Sham. That was after me. That's a pity because I'm 74 में गए. One of my main regrets is that we never taught Indian classical music in Marist. Aaj Ki Sham. Aaj Ki Sham. He was on the piano. No, नहीं. Aaj Ki Sham. Okay. Anyway, our principal was really fat. तो उसके nickname बेटा लड़का लगना ऊतो रख दिन. Any ex-Maris who are in my era who are listening who know brother Placid. Uto. Very good person, calm, cool guy, short, and उसके नाम nickname ही ऊतो था. High school. Wonderful. Yeah, we used to call our head teacher that was in high school. We used to call him scoundrel. Again, because capital punishment. He'll take you to the office and starts shouting at you. Oh, तुम उसके नाम scoundrel रखा. Scoundrel रखा. We used to call him scoundrel. Hindustani व्यक्ति. Yeah, his name was Vijendra Prasad. So, all of the guys at Rishikul know him anyway. He was a skinny guy, and he used to belt people. What about Khodo? People hate names like Khodo. Khodo, yeah. I knew one is called Khodo. You know why? Khodo? Yeah, I know. कान नाक खोते थे. इसीलिए. Yes, of course. People कान नाक and all the. We also had a teacher we used to call Goro. घोरो. Yeah. ग्रोगिरा. टीचिंग कम करते थे, जड़ी बूटी में ज्यादा.
Do you remember names like this? Yes, but these two तो classic है ये वाला. Kodo कहाँ है वाले? Kodo यहाँ वाली. I mean, I don't know. These are names that just comes to mind. No, Kodo. People, because they used to pick the names, you know, and some Kibi, you know, Kibi रहे ना Kibi. Because हम Kibi मारते रहे ना. जो इसे मारते थे. हाँ, Kibi. और they are नहीं कीवी बोलता रहा उसकी कीवी हम लोग का प्रोनाउंसिएशन कीवी बोले थे ना कीवी. हम लोग के स्कूल में एक दो टीचर्स थे प्राइमरी में. I was lucky, but सिर्फ दो ही थे. नहीं, थोड़ा जो ज़्यादा करके बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देते थे. वो यहाँ पर डस्टा से मारते थे. हमें लगा ऐसा. I used to see like that. इतना जोर से करके धुआं भाई दे उसमें जितना चौक रहे हुए नहीं वो वास्तव में. तो हम थोड़ा शांतिपूर्वक प्रिफेक्ट करके बैठा रही ना तो नहीं लगे था ना तो लगता रहा. बट ये वाला हम सोचता काफी पेनफुल रहा यार. Do you still remember the guys name? I still remember the guys name. Yes. हमारे स्कूल में रहा उसका नाम मस्ताफोई. और कौन सी करे उसके लंबा नखून रहो पकड़ के पेट से दबा देवे. ओह बट ये वाला जो दबा दी. Otherwise teacher लोग female teachers used to hit you with a duster quite a lot. सब स्कूल में ruler जो this was common in all schools in Fiji. meter ruler. Wow. One common in all schools. मीटर रोल जनता क्या रहता कुछ क्लास भारी ले टीचर लोग रीच नहीं कर पाते. लंबा टीचर है लड़का आगे नहीं बुला पड़े यही से लपक के धर गए. Actually, that reminds me of we had a primary school teacher. She was chubby, you know. We call it a fully teacher. Fulwarani. Fully teacher. She used to live in 4 miles. And she was in class 2. She's in the 4 miles. And I used to say things like अगर किसी के मोटा देख ले तो बोले मोटी, पतला है तो बोले पतला, you know, नंगा, you know, कोई you know, people used to call them names like this, ना, नंगा. And अगर कोई नहीं लाइक कर तो people used to try to make उसके नाम बना भजिया. Example, अगर कोई भजिया भाई तो उसके नाम में भजिया रख दे. ये ना guy's name was. नहीं easy reference रहता रहा ना. जान जाए. बोले वाह भजिया हो जल्दी कर दे. हम लोग के समोबोला में एक बहुत फनी नाम रहा. No offense, he's a good friend of mine. उसका नाम चिनागी रहा. Do you remember Chinagi? I know Chinagi. I read Chinagi. He's a good friend. What about Naga? Naga भी? Naga भी, yeah. I don't know Naga, but Naga रहा. But Chinagi I know him. I hope he's somewhere bless his soul. Oh, Chinagi. Hello, where if you're there. जी. समोबोला का लड़का है. There's few Chinagis there. What about Soti? Shoti, because you're short, no Shoti. Chinagi used to be around Ajanta Theatre all the time. He used to be the operator. Was he? Yeah. Probably yes. Always around Ajanta Theatre. I know. Very nice guy and handy करके free घुसा देता हम लोग कैसे halfway से. Chinagi. What a name Chinagi. हम tertiary education में जब रहा NTC. मतलब higher class में जब रहा. After high school. बड़ा स्कूल में. अच्छा बड़ा स्कूल में जब रहा. University में. नहीं टीचर्स कॉलेज में जब रहा. Oh, okay. पढ़त रहा. नहीं that became NTC genre. Later became advanced college. Now it's FNU, I think. FNU. Yeah, now it's more advanced. A lot of Lambasa के students रहा ना. बस एक रोज I was the only super one. तो एक रोज बात करते बोले अरे पिलाटर के यार. So there was a nickname called Pilater. मतलब? I don't know. Pilater. खाली उन लोग के conversation में because उन लोग basically एक के जगह से आता रहा सबके. बोले अरे he was referring to somebody तो बोले अरे Pilater के यार and I couldn't stop laughing. Pilater is an area. नहीं एक आदमी का nickname है. Okay. पिलाटर अच्छा डेंजर नाम है ना. पिलाटर टमाटर का एक नाम है. ओ टमाटर बेटर ना. चोर है सुकड़ान हैं सुकड़ान ये से I heard of सुकड़ान. You know what we used to do? He had a sports master ना तो he was really as soon as हम लोग ना सवेरे हाले ना go at 7 o'clock it was soccer शुरू because the school starts at 8:30 ना. हम लोग के स्कूल में पहले पैपा बटोरो तब सोगा खेलो. बस खेलो ना बस जैसे देखो हे भागो सुकड़ाना है. Hey, that's true because we used to travel past Rishikul. Yeah. हम लोग देखते रहे about 7:30 हमारे पास सोका हुआ वहाँ ग्राउंड में. Yeah. सवेरे हम लोग थका ही नहीं लगे पसीना निकली ना. क्लास में जाओ. यंग ग्रुप टाइम पसीना निकलते रहे पसीना क्या गंदा है because यंग ग्रुप पसीना चलते रहे ना. What about I don't know if it sounds fancy but I don't think so appropriate to me but the people hate names like this. Chunilal. It's a common Gujarati name. Yeah, Chunilal is common Gujarati name. I think Ron went to school with them, Mr. Chunilal के साथ.
Chunilal. So Sukran was a school teacher? Yeah. सुकड़ान Brogira? भाई अच्छा सुकड़ान के मांगे चुनीलाल से मिला है ना Yeah. तब होगी भिड़न और नागा से जब मिली हूँ तो चिनागी इधर right. जरूर बता के Chiragi might be. Next time when I go to Samambula, I'll ask people. No, I know which one you're talking. Is he Actually, sadly passed because away. चिनागी छोटी और पिल्ला लोग के संगे पप्पू लोग के संगे बैठे ना हरदम Pulal, Chinagi, Naga. Yeah. Well, that's a good one. It's a good one. It's quite amazing how names are there in this. Well, that's all for the names. I think if you have a thought of any, if you missed of any, we'll come back with it. Lal But, Singh. Lal Singh. लाल सिंह लालेरा घर के नाम कला तो नहीं लाल रख दे बब्बू बब्बू घर रहा Babu. नब्बू बब्बू people used to rhyme names with it. Well, guys, look, there is also, I said we were talking a little bit about charity, and we'll take a break and we'll talk a little bit about charity. A lot of charities are happening around the globe. हमारे कुछ Indian friends हैं that are doing some charity shows, and we were involved in one last night. And I personally would like to propose one because of some sort of a charity show, or not a charity basically show, sorry, a charity organization. Why not? A lot of people are asking money, and a lot of people are asking, I mean, there's a text that came to me and saying ki Pharana Dakhana, वहाँ से आई से Fiji से, and she's got breast cancer and they need $30,000 or $80,000. Look, and it's very difficult to raise that sort of money. Oh yeah, yeah. And if you're coming from Fiji, and if you know you've got a training condition, it's very hard. I don't know what to say. और कम समय में hospital charge money है. How can you get $80,000? If you're not on Medicare, you're basically in trouble. So how can for private treatment. So कोई संस्था यहाँ पर है या नहीं है, किसको हम अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में? We'll talk a little bit on it. How important it is कि जिसके साथ ये होता है, it's a life changing event for them. Yes. And हम लोग ये महसूस नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो उस पे हम कुछ रोशनी कब हो रही है ये ऑपरेशन? I think last week something. It's happened? Yes. And, I think chemotherapy, sorry. Okay. Operation has happened. Cancer, yes. Chemotherapy process. So जिंदगी बचाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? And funny you say that, Param, because we do not have one organization in this country who can actually people go to. It is sad. Apart from we got Red Cross and all that, but there is not Indian community-based में there is no Indian dedicated for that kind of charity organization that will actually stand up and say, हम देंगे 10,000. We'll give you 10. I mean, at least $10,000 or $5,000 is something towards helping people. We'll take a break and we'll talk heavily on that because it is very important. हमारे बीच हो रही है, and there's a lot of people here. अगर कम से कम कुछ भी ऐसा संस्था हो जो $10 भी हफ्ते में डोनेट करे, या तो ना करे $10 फॉर एग्जांपल, मे बी किसी अगर कोई इवेंट देखा है तो जस्ट पे $10 टुवर्ड्स इट. हम तो ये कम से कम कर सकते हैं. मूव बोले अगर लोगों से मांगे तो इट विल बी डिफिकल्ट. अगर कोई वेबसाइट सेट किया जाए जहाँ पर लोग जाकर क्लिक करके पे कर सकते हैं और उनको पता नहीं चलेगा किसने डोनेट किया, आप जानते हैं कि डोनेट किया है, तो वो संस्था वहाँ से संभाल सकते हैं. बट वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट बिकॉज़ इट्स क्वाइट हैवी. इट्स क्वाइट हैवी. Sometimes charity करते हैं, people don't need it ना. जैसे भी नेपाल में डिजास्टर हुआ है, उसका खास मकसद ये है कि वो लोग अभी खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने की जगह नहीं है. हाँ, सिकनेस ना, लोग बीमार होते, they need to survive, और खुद उसके पास नहीं हो, then we give charity, और दिल से देना चाहिए. फिर पूछते नहीं है कि एक बार दे दिया कि पैसा कहाँ गया होगा. Unless people are abusing the money, अपना जेब में लगा लेते कि भाई ये फंक्शन हुआ, पैसा कहाँ गया, there is no accountability. So charity basically means giving from the heart unconditionally to people who really need it. संस्था, people, societies. Do you think अगर जब लोग ये in circumstances where people are coming from overseas and अचानक कुछ हो गई, उनको सख्त ज़रूरत है पैसे की, ऑपरेशंस की, do you think इसमें क्या किया जाए? What do you think people generally, guys, in the people usually give? I belong to a Ramayana monthly, and अगर कोई request आ जाए ऐसे, तो we usually
get together and give पूरा तो नहीं but some portion जितना allowance है according to the constitution कितना हम लोग सकता donate करें we do give but it becomes a जैसे बहुत ज़्यादा अगर if someone knows that this particular organization is giving तो बहुत थोड़ा ज़्यादा request भी आया लगे ना कभी-कभी and we can't judge कि whether it's genuine or not ना तो पूरी ज़िंदगी उसमें चली जाएगी donations में of course yeah, I can understand. So there are a lot of sanghas in Sydney that do donations and which is I think it's a tax deductible ना कुछ हद तक आप कर सकते हैं. नहीं क्या होता है कि I mean charity organizations basically जैसे कि रामायण मंडली होता they are non-profit organizations so they basically do not pay any tax on any of the income they have. It is an incorporation so basically when it's an incorporation you don't pay any tax on it. और क्या होता है कि the only requirement from Department of Fair Trading is they got to have the annual returns lodged to the Department of Fair Trading. Yeah, बिल्कुल the affairs of the organization has to be reported to Department of Fair Trading basically. उसमें भी जीत साहब as an accountant you know कि you can play with figures. हेरा फेरी होते रहता है. Just having the will इंडिविजुअल जैसे हम होते फिर हम एक ग्रुप फॉर्म करते मान लो 5 people on the committee तो all 5 people are different. एक साइड बोलेगा कि भाई अच्छा we should do it दूसरा बोलेगा क्यों देंगे. To be honest with you I've been living in Australia for about 30 years ठीक है ना. In 30 years I've never come across any of our local organizations जो I'm talking about Indian organizations जो है I mean, no offense to anybody that is actually running charity functions. हकीकत है. I've never known of any except for one that has enclosed the figure. कि हमारे टिल में इतने पैसे हैं हमारे बैंक में इतने पैसे हैं. One except for Fisca which has said we got about 100 grand. 105. Because it's on a fixed deposit, so obviously it'll change. Yes. Next month 6 हो जाएगा. And apart from that, I've never had or never seen or heard. इसके एक रीज़न है परम जी. I think उसका एक पॉलिसी है कि if you're not a member of the संस्था, then उसका ये डिफेंस है कि then you don't have a right to know type of thing. लेकिन on the flip side, if it is a public organization, it's registered. It is a public. Then it should be divulged publicly. It's controversial. आपका क्या ख्याल है? जो non-profit organizations है is of course it's a public entity. बिल्कुल. जैसे कि हमने पहले बताया ना, like the function you had last night, you invited the public to come into the function. You didn't invite the members of the organization to come to the function. Unfortunately, most of the members didn't show up, so a bit disappointing there, guys. But we'll work on it. Yeah. So, क्या होता है ना? Once public are involved, you got to get the figures out to the public. Basically, they should know where the money goes. कुछ ना कुछ figure होनी चाहिए. और फिर बाद में एक I think the flip side जैसे कि विनोद ने कहा है कि अगर once ये पता चलता है कि इस संस्था के पास इतने पैसे हैं, तो they will revert back to them. For example, an organization which has got only $100,000 अगर सर्जरी की 50 जरूरत है, तो एक ही सर्जरी में निकल जाएगी. ये बात होती है. We do write checks now and again. A few months ago, I won't mention the name. There's an organization, so we had a meeting and said we'll send them a check. It's just a few $100s, but it's at least something coming from Fisca. I think personally, all these youngsters should actually donate something, so उनको भारी ना पड़े ना. You were supposed to say you were saying something, so I interjected. About the funds and about the funds. Divulging the funds. हम लोग के जो रामायण मंडली है, all members have access to funds. Not funds, but the accountability side of things. कितना पैसा है, कितना है, कौन सी करे हम लोग. And it's a very clean account. And the person who looks after the treasurer is doing his job really well. Because once money comes into an organization, there comes problems and there comes trouble. Because जहाँ पर democratic ruling होती है, वहाँ पर हमेशा problems होती है. So once money changes, पैसे लोग देखते हैं, everybody loves money. And the simple side is you're not going to take money with you anyway. और हम लोग चारों लोग we are all involved in either religious or community organizations. और ये तो साफ जाहिर है कि हम लोग अपने जेब से लगाते हैं. Like last night people contributed alcohol from their pockets. Members said कि मैं एक bottle gin दूंगा, एक scotch दूंगा.
ड्यूटी फ्री है तो सस्ता है, बट फिर भी यू नो वी ऑल से कोई बोलेगा मैं एक पर नमूना दे दूंगा, या somebody might say in your संस्था there is a function, मान लो दिवाली फंक्शन, कोई बोलेगा मैं एक हंडी भरकर कुछ ले आऊंगा, something like that ना, contributions. So members, family members and the actual members, they're always putting in. That's real charity. My question is ki how can we reach to, because I personally don't know how many sangstas are here. I know of a few sangstas. Dozens. So if you think of it, I think 50 more. ज़्यादा होगा. अगर 50 वीडियो शॉप से तो उससे ज़्यादा होगा ना ये मंडली. More than 50. New South Wales you're talking about? Just New South Wales. New South Wales. More than 50, you know. Easy. छोटे-छोटे मंडली अपने घर पे कर रहे हैं, कुछ पैसे बटोर रहे हैं. बड़े-बड़े. They have their members are numbers in hundreds. अच्छा. I think the Australs would be one of the Austral one is Austral one is the biggest here, but they audit their functions are audited and they actually goes to the members. They all have to do a figure, otherwise their registration will be cancelled. Same with FISCA. You have to provide audited accounts once a year, and they all do it. No, even our accounts are audited. Oh, they all do it. How many members? About 20. 20 members. It's a small mandali, na? But tight. But all these little organizations are to themselves. Yeah, बिल्कुल. अपने इलाके में वो मशहूर है, अपने इलाके में वो खुश है कि हमारे पास 20,000 पैसे डॉलर पकड़ के ही रखे हैं. हालांकि वो $1,000 का चेक नहीं लिखेंगे, शायद अगर उनको पता चले तो वो लिख सकते हैं चेक 10% tithe ना. तो एक मैं ये करना चाहता हूँ, प्रपोजल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई होना चाहिए, कोई संस्था होना चाहिए कि अगर कुछ हो तो दे गो टू द संस्था, एक बड़ी सी संस्था हो जहाँ पर कि यहाँ देन दिस संस्था से कि भाई ये सब है, सर्कुलेट कर दिया ईमेल, ये तुरंत हमारे पास एक केस आई है, इसको 80 की जरूरत है. अगर 80 संस्था है एंड दे मस्ट बी कलेक्टिंग एटलीस्ट $500 अ वीक, अगर बड़ी जो है, ठीक है ना, तो वो $80,000 कुछ पैसे नहीं है. हम लोग को चैरिटी शो करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू प्लाव वगैरह बना के बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठंडा में आग बार के लोबो करो. हाँ, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छोटे बूंद से तालाब होता है. आई थिंक दिस इज माय प्रपोजल ना, कि ये होनी चाहिए कि कहीं पर. But to start it off, I think John heads of the monthly organizations have to get together to decide on this, ना कि हाँ हम लोग इतना कंट्रीब्यूट कर, क्योंकि बड़ा मंडली है, क्योंकि छोटा मंडली, भले बड़ा हो या छोटा हो, बट आई थिंक सर्टेन परसेंटेज वो दे. दैट्स इट, दैट वाज माय पॉइंट कि कोई $1,000 दे तो कोई 500 सके, कोई 2,000 सके. प्रोपोर्शनली दो रूल बन गए फॉर एग्जांपल ना, कि आपकी संस्था के हिसाब से इतना डोनेट कर सकते हैं या तो इतना डोनेट कर सकते हैं ना. व्हेन सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेसिडेंट आई तो वो लोग के माइंड में रही कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना फंड्स अवेलेबल है, कितना हम लोग सकते डोनेट करें, और जस्ट सेट इट असाइड कि हम लोग के इतना बजट है for this year, we'll donate. Have you guys heard of anything in Sydney after living for so long कि किसी संस्था ने किसी मरीज को पैसे दी है, या तो फिर वो ऑपरेशन करने के लिए आई है या आया है उसको दिया है? अगर आप लोग ने कहीं कुछ सुना है ऐसा कुछ? Normally they do a special function for it. Families बहुत दौड़ते हैं. I mean, you know, hopefully touch wood it never happens to my family, you know. And I always say make sure you get your travel insurance covered before you arrive in this country. I think the first thing is that. Very important. Or likewise when you go out of Australia, very important. Maybe more important. Kidney failures होते हैं. We have a lot to lose. Kidney failures होते हैं काफी लोग. One thing I'm proud of by monthly is अगर request कहीं से आया है तो X amount of dollars the monthly gives, right? Besides that, every member whatever they can, वो लोग almost $800-900,000 हो जाए at least. तो if you look at it, अगर 50 भी पकड़ लो, $1,000 अगर जाता है that's $50,000. किसी एक इंसान का जो जान है वो बच सकती है. सही फरमाया ना मैंने. Not just that, disability ना. मान लो किसी का किडनी फेलियर है और कुछ प्रॉब्लम है, to treat that early. Cancer है, to treat it before you get to the late stage where it metastasizes and then it's too late, no? And I suppose in a country like Australia, it's quite you know, everybody यहाँ पे जो भी है you get your hospital treatment ना, तो you can go for that. But I think charity functions should be looked into things like poor countries, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर पर जहाँ पे फंडिंग इकट्ठे करते हैं फिजी के लिए, you know, लोग जाते हैं, कुछ बाल बच्चों को दिखाते हैं, देखते हैं, चीज़ देते हैं, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स इत्यादि लेके जाते हैं यहाँ से.
But what are your general thoughts on these guys? What are your general thoughts? Because I am actually thinking of, my heart goes towards, to everybody that needs help. Particularly not to those people who are dead in the dying ages, because I believe in the roots of our generation, or roots, कि हम roots को उगाए तो फिर ना हम लोगों को help मिलेगा. So those who have reached the stage of towards the end, departing stage, so it's a very sad case कि उनकी ज़िंदगी में हुई 70 plus and something like that. Because there's no hip replacement treatment in Fiji. There's no high bypass treatment. There's no stent भी नहीं लगा सकते. Nothing like that. बाहर से लोग जाते हैं ना. It is unfortunate कि वो देश में पैदे हुए और वहीं हैं और हम जैसे चोर निकल गए. For example, What are your thoughts general? From a medical side, Fiji का जो system है वो बिल्कुल third world है. And जब people यहाँ आते हैं, they're really coming over because Fiji में treatment is not available. Do you think they come for that reason? Most of the people will come. चलो वहाँ पे हम घूमेंगे luck के ज़रिए. Because to come here they need documentation. They need a letter from the झुट्टे भी बोल के सके ministry. Corruption तो होता है, but most people will then be diagnosed here too, ना? कि मान लो किसी का kidney failure है या cancer है. They are doing dialysis in Fiji, but it's expensive. But heart treatment, they say, there is no cardiothoracic unit in Fiji. So they go to India, Australia or New Zealand. A lot of people go to India for kidney transplant. Kidney के लिए India जाते हैं. Transplantation and heart surgery to Fiji में मान लो zero है, unless people go from overseas. So they are genuine. They need a letter from the doctor, from the specialist, and then the ministry has to also supply a letter for the government here to help. It has to be at a government to government level for the government to help out as well. So what are some things that you guys personally would like to say to those people that do watch and do charity programs and things like that? Because I think personally कि you can't cut one area. एक ऐसा एरिया देखो जहाँ से कोई संस्था है, पैसे जाते जहाँ से वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्योंकि अगर पर्सनली लोग कर रहे हैं कि हम ये बनाएंगे, हम वहाँ गांव में ये बनाएंगे, गांव में ये कमी है, छोटे छोटे हिस्से में कर रहे हैं कि और बाकी लोगों को क्या हो रहा है ना. सिडनी में एक नया चीज़ अभी निकला है, आपने सुना होगा, यूनाइटेड फिजी कम्युनिटी. UFC. I saw that. Now that is they went to Nepal. They collected 20,000 just from the plow. From the plow. Plow evening था, Sunday को. When was that? I didn't get I think last week or week I bought a few last. plows and this. But like see, you got to know about it. I didn't even know about it. It was on the internet. They circulated. So a team of people, not a team. Thank you guys for not letting us know, because you probably don't like Fiji Indian TV. That's fine. That's fine. Yes, they should have informed. So on the day before, I was given an email. Tomorrow is plow night. That was on a Sunday, so it was too late for us to say anyway. Because they should have told us 2 weeks before. Yeah, exactly. More than that, yeah. They say अभी आज कुछ होएगा, we have to wait 1 week before we'll come back on air. Yeah. So they've gone and collected. हम अपने social sites में share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ email, texts वगैरह. It's all free. But apparently they collected 20,000 just by selling plow. UFC is supposed to be a concept कि जितना संस्था यहाँ है, of course, they will get affiliated to this. So who is in charge of all this? I'm not sure. I have not all the presidents of little invited to a meeting. Okay. I'm not sure whether I think Bobby Mishra is one. From the division. I think them and our other people. Yes. Now हमारा एक issue है with these organizations. It's a professional issue. कि कोई भी संस्था है, it should be accountable, transparent, and it should be democratic. जैसे हमारे कुछ संस्थाएं, उसमें एक president 10-10 साल बैठे रहते. They don't allow young blood, new people. आपका क्या ख्याल है? I agree with that. सहमत है? So if you have to have a fair society where everybody goes and takes part, they must be given an equal chance to be in the leadership role. हमारे कई संस्था सिडनी में है. Again, apologies to some of my friends who are really good leaders. They don't have leadership ability, quality, training, or the ability, natural ability होता है people का leadership. So what is this thing? What is it? A power hungry thing? It is a power. It's an ego thing. It's a chair thing. वो main thing अगर वो हम निकाल देंगे, then we will unite. Otherwise एक संस्था निकाल देंगे तो काफी चीज ना काफी चीज चला जाएगा. नया संस्था है, people बोलेंगे अच्छा who is here
Is it democratic? Have people had an election? Next year फिर से उसको election होगा, so other people have chance? Or is it एक संस्था जहाँ पर टोला बन जाता है? See, and that is one of the main reasons of Indo-Fijian people in Sydney अपन खोलते हैं, because they try to go into organizations. वो देखते, हम मंडलिक बात नहीं करते. That's religious based. That is a spiritual thing. People who are spiritual will go there, either church, mandir, masjid. This is public community organization, non-religion based. उसमें fair play और ability to get everybody to be involved. आपको कुछ कहना है, लोगों को सुनना है. That's what democracy. Even if you उससे सहमत नहीं है, कोई बात नहीं. But everybody has got a voice, ना? And the leadership should be democratic. Election should be fair. If a person is leader, वोट खरीदा भी जा सकता है ना? खरीदते हैं. Good leaders will be re-elected, but rules बनते कि you can't be a president for more than 2 years or 3 years. 3 years, mostly it should be set up for 3 years anyway. Most places, जैसे भी अमेरिका में 2 terms आपको देते हैं. Yeah. Obama will be gone after 2 terms. 2 terms, that's it. Doesn't matter if it is super leader ना. तो ये सब चीज़ बहुत important है हमारे लोगों को समझना कि अगर तुम्हारा जो organization private मंडली है, तो जो मुखिया है, they stay there until they die. That's okay. Because people will then gather around that person कि ये हमारा लीडर है. That is why वो unity है, मधुमक्खी करके ना. But public संस्था जो है, they can't run. जितने भी organizations के बारे में बात कर रहा हूँ, they are all basically a public entity anyway. Because अगर आप गए हैं, ये गए हैं, मैं गया हूँ, तो basically we put money in there ना, या तो हम मेहनत करते हैं उसमें ना. वो तो membership है, but लेकिन जो संस्था है, the religious based one is basically based around our Indian calendar. जैसे अष्टमी मनाते हैं, and it's not done in a hall normally, it's in a house or a मंदिर. So ये क्या है UNICEF आपने बोला? United Fijian Community, something like that. UFC. Yes. So this is a breath of fresh air, but इसको अब track record देखना है हमको ना, कि we should all support it. Our member Fiska has been invited to attend. I think my president Awindra attended, I'm not sure. But the next meeting is also scheduled soon. And the other thing is को minutes निकालना है ना. So how was this formed? And I haven't heard I first time I heard was when I was sent this email saying that डॉक्टर की email भेजो, पैसे आएंगे, donate कर देंगे. UFC is formed and blah blah blah, and you know, like if it's a public organization, its activities should be publicized. हाँ, पता चाहिए, पर जो मीडिया सर्विस बताना चाहिए ना. टेलीविजन, न्यूज़पेपर में ना. वैसे फालतू में तो न्यूज़ बेचते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं सोशल साइट्स में यार, कि ये है वो, अपने ये सेल्फी वो सेल्फी छोड़ते मैं भी छोड़ता हूँ. बट स्टिल अगर यू गिव इट टू मी, आई विल शेयर इट मैन, यू नो. फालतू में हम लोग ये शेयर करते रहते हैं काफी चीजें से, है ना. तो ऑफ कोर्स वी विल शेयर. कोई शोज होती है विल शेयर, नो. हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, वो उसका एक फंडरेजर था फ्यू इयर्स अगो. तो मैंने बहुत फ्यू है, ही इज अ म्यूजिशियन. तो मैंने एक मुद्दा चढ़ा, आस्क अ क्वेश्चन ना, एंड ही गॉट ऑफेंडेड. ही डिडंट लाइक इट ना. मैंने बोला कि ये जो आपका संस्था है, ये है, इज इट अ रजिस्टर्ड चैरिटी, आप चैरिटेबल करते हैं? यू नो, इन ऑस्ट्रेलिया आई वाज ट्राइंग टू गिव हिम अ बिट ऑफ फ्रेंडली एडवाइस कि जस्ट बी केयरफुल, कि यू मस्ट बी रजिस्टर्ड और गेट परमिशन, बिकॉज इट्स इलीगल टू बी रेजिंग चैरिटी. True. Unless you're unless it's a private one, हम घर घर जाते, भाई ये भैया बीमार, इसको कुछ दे दो ना. If you're having a public function and saying this is a charity event, लोग को शायद ये मालूम नहीं होगा. In Australia it's illegal. You can be charged for it. You need a license for those anyway. You have to be registered charitable. उसका एक नंबर मिलता है. तो मैंने ये मुद्दा छेड़ा, तो ये शख्स थोड़ा he got offended and he said a few things to me. And I said, भाई आप just checking ना, because if you want me to be attending and be part of it, then हम भी पिसाए उसमें ना. That's all I said. Just be careful. And he got offended. Well, a lot of things do happen, but you know, charity की बात जब होती है, हम लोग करते ही रहते हैं, और you know, it's a new thing that has been performed as well. We'll touch a little bit strongly and heavily on this because they are, जैसे कि भी हम लोगों को पता नहीं चला गया कि only 20,000 has been, you know. It's not a lot. It's not a, you know, इतने सारे संस्थान हैं. I mean, if I can pick 50, and if you take $100 off each, it's $5,000 without selling the plow and the hard work. So it's a new organization, newly formed, just a few weeks old, I think. And this money was raised just by selling plow. Okay.
और we'll come back and we'll ask people of that as well. So if they sold 2,000 packs at $10, I think there must be donations as well. Donations भी आए. Because I think this organization was formed around the event of Nepal. Okay. तब पहले नहीं उसके बाद after the event in Nepal. यानी कि people थोड़े नरम दिल हो रहे हैं. अच्छी चीज़ है ये इकट्ठा होके चले हम. वेल जब ये सब चीज़ की बात आती है तो वी ऑलवेज रिमेंबर अबाउट कि हम किस तरह से जिए, कि जीना चाहिए हम लोगों को सब चीज़ के लिए. पैसे चाहिए, किस तरह से हम जिए. उसी बात पे I've got a song actually lined up and I think I'll request our friend here today to sing us that song, and it's जीना जीना song. ट्रैक में लगा के रखा हूँ. हाँ जी चलते हैं लाइफ. एंड आप वहीं बैठे रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. हाँ we'll move the mic. कुछ मूव करने की जरूरत नहीं है. बस हम एक छोटा सा कटर ब्रेक ले रहे हैं. वो माइक निकाल के वहाँ पर खड़े होते मैं वापस आता. Ergonomic system. केवल ऑडियंस से रिक्वेस्ट है. This is just a live impromptu, so just excuse the mistakes. Just write all the bad comments, na? Yeah, sure. Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Konchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. और Fiji Indian TV में आप शामिल हैं हम लोगों के साथ. मैं ये लगा कर रखा हूँ सुनने के लिए कि हमारे साहबजादे क्या गाने गाएंगे. And what song is he singing today? आप कौन सा गीत गा रहे हैं सर? नया गाना है जी, नया गाना है और मुझे पर्सनली अच्छा लगा. यूजुअली आतिफ असलम को मैं उतना नहीं पसंद कर रहा था, पर इस गाने के बाद थोड़ा ज़्यादा पसंद करने लगा. So the song actually is called Jeena and Jeena, and those who haven't seen this movie must go and watch it. And Jeena Jeena is from Badlapur, is it? Badlapur. Yes. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आपको बदलापुर जगह का नाम है? बदलापुर फिल्म का नाम है. बदलापुर जगह का नाम है. Yes, true. It's a name of a place as well. Yes, and we know this is going to sing. We've actually recorded this song. We know and hope people who are watching this will be enjoying the song, and I'll try to do my very best to mix this song for you. Okay, here we go. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना जीना
कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरे हमदम। ओ आसमां मेरा ज़मीं को मेरे आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Konchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. Very nice. Thank you भाई। आपको पसीना क्यों छूट रहा है? बहुत गर्मी है पर नहीं आपका मैं जंप अप है। Did you enjoy? Thank you. Yeah, it was good. Very Very nice. good. अभी फिर उसको बाद में सुनेंगे। फिर से सुनेंगे? Because we couldn't hear mixing ना। Mixed version है अभी इस पे। Modern reggae beat था? What Yes, beat yes, would you it was call a it? reggae beat, I could yes. just hear it. Reggae beat। Very nice. Impeccable. No mistake first time. अच्छा, impeccable पहली बार आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैं it's already on Facebook। रिकॉर्ड हो गया है। Okay. But here this is the first time we performed जी live. जी। Impeccable के मतलब कौन सी? No mistakes. अरे इम्पेक्टेबल मतलब है कि जैसे कि उसका हम कोई बोल नहीं सकते कि यहाँ रुक गया था, यहाँ झटका लगा था, सुरों पर गया था। Which is always hard with new songs because वो हमारा पहले की तरह ना या सुकु सुकु हमारा समा जाते दिमाग में ना। So with new songs you have to learn the whole thing. This is a new challenge I've taken. I've been singing old songs. Yes, I know. And thanks to my big brother, Paramji. Yes. कौन इसका nickname रहा? TikTok. Murali Tot. He's really given me the chance to sing it, and it's come up good. I'm happy with my singing. Can I just say that in Sydney there are a lot of personalities. Just a quick one, and people उसका motives नहीं जान पाते ना. They're always looking at the negative side. So one thing with the Param is innovation. He does give people chance, and उसको empowering बोलते हैं कि आप कर सकते हैं. Yeah. This is the first year you're trying new songs, maybe. Yeah. Okay. And this first time. This is the first new songs. Empowerment, ना? किसी ने फरमाया कि बदलापुर थाने में है। आपने पूछा ना बदलापुर कहाँ है? कहा कि बदलापुर थाने में है। थाना is in a place. Jail. It's a jail. थाना normally jail के बोलते हैं. थाने में है. Thane is a city. Yes. Suburb. Thane is a place. I think it's about Mumbai से कुछ दूर है. Okay, because when I was in India, I heard this name. कभी गया नहीं हो बदलापुर. But मैं सोचा कि this 10 years ago. I think they it's a actually place. shot the film Badlapur in there as well. Okay, so it is a place, guys. So आशीष मीना जी हमारे एक खास तौर पे इंडिया से he watches our program and
you know, he does comments. तो आशीष से हम जरूर पूछेंगे. आशीष बदलापुर कहाँ है? थाने is actually, I know, is about an hour's train, you know, from Bombay. So positive comments have come, you know. People liked your song. Oh, thank you. It was impromptu and that was good. So you too, you know, hopefully can get ready, you know, and start jamming because the facilities are all ready for you guys. You know, थोड़ा सा पसीना छूटी. I haven't been on spot question नहीं पूछा, but छूटना चाहिए. कल रात का हमारा बहुत पसीना छूटा था ना स्टेज पे. लेकिन जी हाँ, मेरा एक ट्रैक है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद इट. मेरा एक नैन मिलाकर चैन चुराना रफ़ी का मैं बहुत दिन से गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. मैं एक ही बार गाया हूँ इस मास्टर के संगे. ट्रैक है लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद द ट्रैक. Have you looked for it? No, I just my friend made it. I have a friend in Fiji. We all know, and he actually. How does the song go? नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम. Yeah, We can बिल्कुल. look for it. We can look for it. अगर नहीं मिलता है तो जब थोड़ा खाली लगता है मुझको ना. Because वो इस change over था when westernize होने लगा था and Rafi was singing more western rock and roll type. तो उसमें गिटार और ड्रम्स का जैसे कि तीसरी मंजिल में, you know. You have to have a drummer who can play like that and a guitarist to make it sound. कैसे wording उसके जाए डॉक? नैन मिलाकर चैन चुराना. नैन I suppose नैना आइस ना. नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम. It's more of a dance song. थोड़ा medium pace. उतना fast नहीं है. Yeah. I don't think anybody's recorded it yet, but I like that song. I haven't heard people singing it either. I sang it in about 12 years ago with HMO. Veer played the guitar very well in Bowman Hall. Oh, Salin. And after that, it hasn't track भी नहीं है. Nobody sang आपके it. स्तर के एक और इंसान हमारे chat room में वो करे कि it's a very beautiful song. And I've got a track and I'm ready to record it, but I would rather go for a more sort of filled version. We might karaoke. Why we don't mix it, na Param? Yeah, I can. Yes. We'll mix it. Well, Param has actually brought me back into my own habitat and ecosystem because in Fiji में हम लोग सोनस बैंड ज़्यादा reggae बजाता रहा. And reggae is very catchy. Once you get into the groove, you just feel like singing and keep on going. जो लोग ecosystem नहीं समझते उसका माहौल मतलब कि जहाँ वो comfortable, something that you like. जैसे आप मछली को निकाल कर एक खटिया में रख देगा तो would be comfortable ना. मछली पानी में ही पसंद करेगा. So ecosystem, just clarification. Thank you, Doc. But you know, we do all these songs and you know and a lot of people out there. Like yesterday, we saw so many people singing, Doc, and it was quite amazing. Yeah, unfortunately, it started a bit late because we had another at least 6 songs. But you did well to tidy up. Could have tried it a little bit more, but there's a lot of things happening when there's so many singers involved. Because क्या होता है कि सबको जल्दी होती है. गाना गाए मतलब हमारा गाना कब है, हम गाना गाए के निकले मतलब because सब मांगे गाना गाओ. But I think उसी गाओ में they forget कि हाँ हम लोगों को थोड़ा आराम करना चाहिए, आराम से मस्त में होना चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए वो कैसे गा रहा है. And respect as well. That's very important. If you listen to as I'm speaking in from a singer's point of view. अगर अभी सपोज परम जी गाई सकें, सॉरी परम गाई सकें, he's raised the bar यहाँ पे कर दी से, and then as a singer I'll try to at least equal करे क्या थोड़ा अच्छा गाएगा. जब इनकी appreciate अगर उसके ताली बज गए तो हम ट्राई करेगा अपन गाना पे ताली बजवाए के ना. You should have that attitude. जब तक गाना गाता for the 4-5 minutes you sing, you try to bring out the best in you. Because that moment you have with the audience is very important. Because उसके बाद में वो moment मिलेगा ही नहीं. You can either ruin it. You can have the glory. Make or break. And Patra here also yesterday performed a song, and that was an old number and a reggae beat again. Reggae beat. कौन गाना था? Gita Dutt की आवाज में मांगा था. Reggae, right? It was nice. It was good. But I didn't get the thing was I didn't get the beat I wanted on that song. I didn't get that beat. But it was good. गाना नहीं अच्छा लगा आपके? नहीं. So you enjoyed it. I didn't get the beat of people it. saying, "Ooh, इसके feedback नहीं मिला. Fallback नहीं. Fallbacks were okay. But anyway, I mean overall it was good. There's so many singers there. मेरे को एक और prepared 3 songs. I prepared 3 songs and then I 4 o'clock preparing 3 songs. And then I dropped 2 because I mean there's so many people there. So let I them think go. all the singers dropped a song. I couldn't do. I
duets with Naz ji. तुझे देखा little तो skit was good. Your little skit. तुझे देखा तो जाना सनम. We prepared the night before till midnight, and then poor lady when she came वो बज ही नहीं रहा था. Yeah. But anyway, look, it's a good thing, and a lot of things happen out of this. But we will pursue the thought of charity in our future programs, and also next week की program में भी हम बातें करेंगे, कुछ entertainment के बारे में बातें करेंगे कि किस तरह से हम लोगों को entertain करते हैं, किस तरह से लोगों को entertain करनी चाहिए, जहाँ functions हो रही है उसमें हम लोगों को क्या importance देनी चाहिए, because audience आते हैं देखने के लिए, and I observe a lot of audience, कि वो क्यों ताली नहीं बजा रहा है या तो फिर क्यों ऐसे ही बैठा है. बॉलीवुड में lot of things. 3 entertainment. People, why do they go out? हम ये देखना चाहिए. Before we go on the stage, हमको सोचना है why are these people here? At least मुस्कान भी होनी चाहिए. अगर वो बैठे ऐसे करके देख रहे हैं जो गाने सुन रहे, थोड़ी सी मुस्कान भी उसके चेहरे में अगर आ जाए तो you've reached the best. And when we are with the mic, as you said, 4-5 minutes, it's basically our duty to observe and see are they being entertained. So our performance is like that कि भाई ये लोग हंसना चाहते हैं, भी उदास है इसको हंसा दें, बैठे इसको उठा कर नचा दें, है ना? और exactly, yeah, true. Or something like that. It's basically skill. yeah. That's संगीत. संगीत वही सब And then people will go home and say, अच्छा कैसे रहा शो? राइट रहा. कैसे रहा? I think Varun did well. He was pulling everybody and got the ball rolling, and it was good. He had a little complaint कि उतना proactive नहीं था. मैंने बोला देखो ये teenager का show नहीं है भाई. It's a charity show. People come here to have a dinner and listen to some music, and then it's a cold night. They want to go home early. So he was still all right, happy. Well, there's another show which is coming, and I think you two are performing. You and you also performing. Are you? Is it get started something? Rafi sort of. MGS. I have been invited. I will attend. I support that. I don't think I'm part of the formal side. You're not singing any songs. हम अक्सर जाते तो बोल देते गा दो ना, तो तैयार रहना चाहिए. Yeah, but I'm supporting. They're a group of. की CD लेके जाए ना. They're a club, and it's good. They're actually promoting new singers. Well, guys, we've come towards the end of the program, and our friend Mr. Noji is still stuck with his, car. With his car, yeah. And he needs some cream bun. He's wasted 3 hours already. He needs some cream bun, which he had last week. Aja bolo. But I think his car is actually giving home, so he has a bit. Well, it's been a good run, and next week we'll come with more topics. And please do watch our subscribe here on YouTube channel. Right. Yeah. उसके तुम पेट नहीं पहुंच देना. इधर पहुंचना पेट पहुंचना है ना. राव yes ये राव की ओर से टेनी टोट और जनोला की ओर से पतरा से Shabak thank you for listening and thank you for coming on very short notice. That's okay. I really appreciate being with you around you guys. So just one thing, sorry. That song, Ron has told us about that song. It's from movie Aamne Saamne, Shashi Kapoor's movie. Yes. And actually, he also posted a link for you to get the karaoke. Okay, thank you very much, भाई साहब. शशि जी उसमें अच्छी तरह से डांस किया, white suit पहन के. किसने? शमी जी ने? Shashi Kapoor. Shashi Kapoor. Shashi is not well at the moment. I saw him on a wheelchair. Not physically, लेकिन एक awards night में news. अभी उसको सम्मान किया गया है with lifetime achievement award. And he was receiving all these things, and he was exactly white suit. Felt sorry for him. He's a very active, good-looking actor, always smiling. This infectious smile, na? And a very good mover. He's good build. I must say he danced better than Shami Kapoor. But Shamika और कुछ भी था उसमें. Sashi is a good dancer. Well, guys, next week we'll be talking about entertainment, कि हम लोगों को किस तरह से entertain कर सकते हैं. Very good. आमतौर पे देखा जाए तो we go to karaoke nights या तो दोस्तों के साथ. Again, this is through experiences in my life that I pick out this topic, and not this weekend, last weekend हम एक दोस्त के घर पर गए भोजन करने के लिए. I was invited for dinner, and I'm not usually exposed to the karaoke thing, so वहाँ पर मेरा गाना was very popular. तो ये सब अपने on screen, and I enjoyed it. क्योंकि वो माइक लेके आते हैं, वो ऑन कर देते हैं, and वो मस्त हो जाते हैं. खड़े दूसरे के टाने के वो बुक लेके बैठे दूसरा गाना खोज रहे हैं, इधर दूसरा गाना. It's a totally different माहौल में. Yes.
प्राइवेट पार्टी कोई अपना लैपटॉप लेके आया वो उसमें चल रहा है ना ये सब चीज एंड यू कैन हियर सम ऑफ द गुड थिंग्स मैन यू नो और वही में से बिकॉज इट्स अ स्मॉल गैदरिंग एंड शर्मापन कुछ नहीं होता ना well it is a new generation ना ये जो IT का tech and everybody now you see singing you know into karaoke and then that gave me a thought and I said नीचे बाबस में एक छोटा सा स्पीकर देखा पावर्ड एल्टो इट इज ऑन स्पेशल मैंने बोला कि ये छोटा वाला स्पीकर विल बी वेरी यस एंड इट्स पावर्ड 2 8 इंच का अगर आप लेके साथ में चलेंगे दोस्त और छोटा वाला मिक्सर जो नीचे रख लिंकी में बांधो अरे बस ये तो मस्त है कहीं बैठा बस गिटार लगाया चला गया हमारा एक फ्रेंड है न्यूजीलैंड में रहता है ज्यादा स्पीकर की जरूरत नहीं है ड्रामा ही दिस व्हाट ही डज सक्सेना ओके that's what he does वो लेके घूमे अपन अच्छा हाँ सब कुछ रेडी भाई अपन ढांचा लेके घूमे Can I just quickly remind तकरीबन 15 years ago when we used to sing in Nisha's restaurant remember yeah up here Northumberland Street लेकिन 15 साल में काफी एडवांस हो गया पीपल कल कुछ लोग अपना iPad ले घूमते थे ना बोला भाई हम तो बैकवर्ड निकल गए वहां से निकले Doc but really something most people got stuck last night they did quite a few people the old paper is still the safest thing I had a backup that's why I iPad got stuck did it no not mine so I always carry my jolly with the book in there गड़बड़ है पेंसिल से भी लिखा एटलीस्ट दिखाया जाए कोड कोड का चेंज है ना yeah that's true well so next week we'll talk a lot about entertainment कि हमारी जिंदगी में entertainment why it is needed and how it has changed our life from the yesteryears yes and I think we've being in entertainment field we can share a lot of thoughts पुराने जमाने गांव में लोग ढोलक तबला हारमोनियम लेकर that was the entertainment फिर कुट्टू करते थे भजन कीर्तन गाते थे फिर बैंड्स निकला ना जैसे कि मास्टर्स है और अभी कैरियोकी आ गया है you don't need a band big thing ना एक आइडिया है I think we don't have a comedy session here हमारे पास कॉमेडियंस बहुत है एक हमारा छोटा शो करना चाहिए जहाँ पर एक कॉमेडी इवनिंग होना चाहिए full comedy you have to be very talented because on the spot impromptu होना चाहिए गाली नहीं देना चाहिए रसल पीटर्स yes something वो तो काफी पहुंचे हुए बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट रसल पीटर्स की तरह तो दे सुपर टैलेंटेड ना ऑन द स्पॉट वो जोक बना देते सो मे बी वी शुड हैव अ नाइट जहाँ पर हाँ वो तो बहुत स्मार्ट है ना शेर शायरी नहीं बहुत लेकिन जोक इवनिंग होना चाहिए इनवाइट पीपल हाँ जैसे हमारे जो एमसी साहब है ये हमारा शो में एमसी किया था आशिकी में अनूप स्टैंड अप कॉमेडियन Robert राइट तो वो खड़े खड़े बना देते तो मे बी वी कुड इनवाइट 8-10 people and just have them do 2 or 3 minute skits just there थोड़ा गाना वगैरह भी होगा relaxed atmosphere like we have people here and they and we all stand up and we have to do a joke on a topic उसको topic दे देते हैं of course you will be good at it अच्छा बोलो आप इसके तुम टेनी टोट मुर्गा के बारे में एक जोक बताओ और जैसे मुर्गा के बारे में ना वो बतख के बारे में उसमें मेक अ जोक अबाउट वाटर जनोला के बारे में वो कुछ भी ना एक खाली शब्द बताया यू नो यू हैवंट डन आवर क्विज फॉर अ लॉन्ग व्हाइल आदा ये बच गया ना हम कर दिया he's done it before he's here before oh he was okay he's already done his past his बच गया अपन मच गया पास कर लीजिए या मच्छर के बारे में सो आदमी खड़ा कर दो बोलो अच्छा योर टॉपिक इज मच्छर एंड यू गॉट 5 seconds टू स्टार्ट फन क्राउड होनी चाहिए ना एंजॉय करने के लिए यू हैव 2 minutes विदिन 2 minutes तुमको वो जोक बताने चाहिए we'll try it so while we are talking on entertainment next week we'll probably bring some songs as well we'll probably have a little bit of a गिरी जैसे लोग कहते हैं कुछ गिटार वगैरह and then we'll probably do something and I think it's high time we should be entertained and entertain people so in that thought episode 63 we are signing off guys yes and before we go thank you everybody for coming last night to support our Lovo night Fiska night all our friends there's too many to name Angeline and all our other friends who are stalwart supporters they're always there each and every one thank you for coming and we will tell you how much we made probably would be much because crowd was a little bit less but we did make and we could not sell liquor because we did not have a license unfortunately that's why it was BYU Oh, that was actually good. Thank you very much. We actually did enjoy, and once again, thank you, Doc, and the whole Fiska team for putting up that, nice night. Thank you all guys for singing and emceeing and being there right till the end.
Very true. Much appreciated. Very true. And unfortunately, we couldn't stay because of coming here early. I couldn't stay and clean up. But hey, you know, we're a good my team. help is always there. And next week, जैसे कि मैंने पहले फरमाया, let's be prepared, guys, and let's have a little bit of a jam next week. Yep. बटा जिम लड़ा के मामला. Guitar चुन के रख रखता मैं. And we'll come back next week, guys. I'll have to come a bit early so we can practice the chords a little bit. तुम कौन सी कहना सवेरे शनिवार के रात सैटरडे नाइट कपड़ा मुंह धोए के ब्रश करके सब चीज का कपड़ा पहन के सो जाना. सवेरे खाली गिटार लेके चल देना. चाय बना के रख देना गरमा के कर देना. सवेरे गिटार लेके चल देना. गरम भी नहीं थर्मस में अरे अलार्म बजे ऐसे करना चाहिए. बाहर झटकना समी कपूर का रकम बस गाड़ी में बैठ जाना. कपड़ा तकिया के नीचे रखा था. आई नो जाता. Okay, guys, let's go and move on. And thank you for that. Thank you, Vinod. Rao. Thank you, Rao. And